We are starting the new topic, analytical chemistry, because this topic board question. Yeah, boys, listen. Electron dot diagram, you will once you complete, then we'll discuss out. ठीक है? सब equalize हो गया. अब जितना हार का कुछ ये नहीं. Last man, come here. सीधे बाहर जाओ, आराम करो. हाँ? Please settle down. Okay? चलो बैठ जाओ आराम से. Break is over. Water bottle, please give it to him. दे दो उसको water bottle, पानी पीने का. Okay, now this topic is fourth topic. Today we'll try to cover up this topic in this lecture itself, because ये topic एक ही 2 पेज का है, कुछ 2 या 3 पेज का. Okay, and we'll try to cover up this topic. Now, what is analytical chemistry? Now, analytical chemistry means, suppose if you say, sir, I'm dealing with analytical chemistry, or I want to analyze this particular marker, means what? You're trying to understand the composition of this marker, what it contains. Yeah, listen. What it contains, which elements are present, or which ions. Normally, analytical chemistry not only comes for covalent compounds, but also, ionic compounds. But in your syllabus, you're having ionic compounds and a salt analysis. Now, which salts, for example, ions we can actually detect. Calcium ions, magnesium ions, okay. Likewise, for example, let us say ferrous ion, ferric ion. Now, some ions are colored, some ions are colorless. Means some salts are colored and some salts are colorless. So that means with the help of that characteristic color itself, we can identify the type of salt which is, or the the type of ion which is present. Okay. So when we try to analyze that particular salt through, let us say, for example, not just by, of course, by noting down some characteristic color, it is like a physical kind of, for example, observation. But when we try to do analysis, core kind of analysis, then we have to do studies like chemical reactions. So chemical reaction के लिए कुछ reagents चाहिए जो उससे react करेगा. So the reagents which are used in this chapter, okay, the chemical reagents. What are reagents? Reagents are substances which actually take part in that chemical reaction, or which react with these salts, cations or anions, and finally give some kind of characteristic test. Okay, and those reagents which you are using in this chapter is NaOH, yeah, NH4OH, because these reagents, they give characteristic test with these ions. Clear? Now, suppose if I want to analyze whether this salt, suppose there is a salt basically, okay, is containing cations or anions. Now, what is it? Sir, can I just go for 10 minutes? Okay, cations or anions, okay, ये NaOH के साथ react करेंगे, and you will get some characteristic colored kind of, for example, precipitate, and we come to know that yes, look, this is the salt or cations present. But how much amount of cations or anions is present? What is the quantity of that cations or anions? Then that is called quantitative analysis. When we try to understand the chemical reaction through quality means through chemical reactions or properties of that particular cations, then it is called qualitative analysis. Clear? Qualitative analysis means what? Suppose a person is having some kind of infection, okay, in the body. So what he does, he gives a blood test to the to the pathological department. Clear? And they want to know what kind of infection is there. So they analyze the blood sample. So the given sample is tested not only for the amount, the kind of particles which are present in that blood, which are infectious. Secondly, how much quantity of those ions are present, which are creating this huge infection. Okay, let us say, for example, the fever is not coming down at all. What is the reason? How much quantity of that infection has spread out in our system? That is quantitative aspect, basically. Okay? So how much means quantitative? What are the important ions present in that particular salt?
is qualitative analysis. Okay, so this is the both thing which we are going to discuss. Okay, now the first thing which we are going to discuss is over here that analytical chemistry this basically deals with identification, separation of unknown substances. Okay, likewise the chemical composition of any sub. अब ये marker में क्या chemical composition है उसका analysis करें, right? Like celebrities, for example, like let us say for example the chef of the 5-star hotel, when they actually try to see the food when after making, then they how they actually analyze. They first they take the smell of the food. Now the smell of those, for example, the spices will tell us, you have added X, Y, Z spices over. Okay. Likewise, how much quantity of the spices have to be added depending upon how many people are actually are going to have that lunch or dinner. So accordingly, they will have had the amount of salt, amount of spices, amount of rice, amount of dal. So again, that is analysis basically. Clear? So what is the idea over there? But when we are talking about the quantity of rice which is to be made, is nothing but quantitative analysis. उसमें कितना spices पड़ेगा, क्या पड़ेगा, okay, वो सब वो भी analytical part है. So there is a branch of chemistry which is called as analytical chemistry. We are going to see that. Clear? Likewise, for example, you like for example, if a person wants to remain fit, okay, so we actually measure his body mass index. What is this body mass index? Huh? BMI. राइट, तो बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, यानी बॉडी आपका कितना फैटी है या लेस फैटी है. ओके, हाउ टू एक्चुअली व्हाट फाइंड आउट. So there is a test given over there. So accordingly, that also is coming in analytical chemistry basis. So let us see, for example, the first page which has been given over there. Okay, Gauri will read out the introduction part, clear, which is given in this particular book. So page number 82. Chalo, 82. All of you remove the page number 82. Come on, first. Analysis. बोलिए. एक मिनट. Last bench. Are you with me? चलिए. या पेज नंबर क्या है? 82. ओके, चलो नम्या पढ़िए, फिर से पढ़िए वो पार्ट. शी हैज रेड दैट. रीड आउट पेज नंबर 82, फर्स्ट इंट्रोडक्शन. Composition, okay, in terms of percentage. आगे पढ़िए. Yes, by chemical test we have to analyze it. Just by looking, sir, by looking at it we are doing analytical chemistry. Okay, like by looking up at the person, the doctor cannot say, this much amount of fat is there in your body, this much amount of protein is there, clear, or this is deficient in your body. They do such a certain test. Come on, then next one. Yes. Yes. Sodium hydroxide and ammonium hydroxide. चलिए बोलिए. Then yes, underline that because they give characteristic tests with these salts. That's why we are using them as reagents. Then next one. Quantitative. Qualitative means what is present, and quantitative, how much is that quantity of that material is present. Further, yes, you will read the what is it? The name of the ion. They will read the symbol. Come on, you will read the symbol, and she will read the color. Sorry, the name of the ion. Follow. Ammonium ion. उसका formula या symbol क्या है? NH4 plus. Then K plus. Then पहले वो पढ़ेंगे. चलो then बहुत ही अच्छा बोला तुमने. M2 plus. Then let Eb2 plus. आगे बढ़िए. Colored ions, colored cations. बोलिए. प्लस क्या कलर है? एक मिनट, ये ऐसा नहीं है. 3 कॉलम है ना उधर.
So three students will be telling. Okay. So Namya, you will tell first. Okay. You will tell second, and she will read the third one. Okay. Chalo. 1, 2, 3. This triangle will be followed. Chalo. Huh? Cuprican. Blue color. Very good. Huh? Light green color. Dirty green we will say. Then Perican. Huh? Fe plus 3. Reddish brown or yellowish brown. Yellowish brown. Okay. Nickel iron. Light green. Okay. Then Cr plus 3. Huh? Green color. Then manganese iron. Mn plus 2. Pink color. Okay. Very good. Now, Ranveer, next part. Colorless. Colorless anions. Padhiye. And then you will read. 1 minute. She will read the symbol and you will read the name. Chalo. Huh? Chloride ion. Cl minus. Then sulfate ions. 2 minus. They are all colorless. Huh? Then carbonate. Yes. Sulfide ions. Yes. Sulfide. Na? Sulfide. Tiger ka T. Or daddy ka D is, star. SO3. Then acetate ions. CH3CO minus. Then okay. Colored ions. Now 3 students will be required. Okay. 1, you will read second and third. Chalo. Boliye. Permanganate ion. Minus. Color. Pink color. Then dichromate ion. 2 minus. Orange color. Then CR4 2 minus. Yellow. Then now all of you, first column only you to write. उसका color, उसका symbol बिना देख के आपको लिखना है. First you write down. Write down. पूरा ये column है. इसमें symbol और color को छोड़ के आपको देख के सब लिखना है. Okay? Symbol and color जहां पे भी आएगा. पेज नंबर बता दीजिए ना. 82 पेज नंबर 82. ठीक है. And then जो डार्क लेटर्स में लिखा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो डेफिनेशन डायरेक्टली आपको कॉपी करना है बुक से. ठीक है. इसके लिखने के बाद सीधे आपको ये टेबल पे आना है. ठीक है. फिर लिखना है. ओके. बिना देख के आपको ये कलर और उसका है जहां कलर्ड है, कलरलेस तो डायरेक्टली सिंबल आपको लिखना. दैट्स ऑल. तो टेबल व्हिच हैज बीन गिवन ओवर हियर, डायरेक्ट ओनली वंस. At home you will do twice this particular part. Start. In the meantime, homework there. Okay. Okay. Next week में homework दिया. Okay. Next week में करना. Nothing to worry. You are wasting your time. Ranveer, start कीजिए. Well, all of you. First, you copy down the title, analytical chemistry, okay? और उसमें reagent क्या है? NaOH, ठीक है? और उसके बाद, ठीक है? आपको क्या लिखना है? पूरा column बनाइए. And in the meantime, I'm not going to relax. I'm going to write these 14 reactions on the board so that we can discuss out this, and then proceed with the reactions.
What are लिखना? बोलिए. Anyone who has not written a single word will be going out of the class. Last bench. पूरा लिख के. First, you write the definition of analytical chemistry. Second, you will write, for example, those columns, except the color or sorry, the name of the ion, okay, color and the symbol you have to write without saying. Analysis, analytical chemistry. Bas. Analysis. After completing, you start copying of this, and this particular part you have to use both the pages in this manner, side by side. ठीक है, अगर ये पेज वेकेंट जा रहा है छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि इधर ये प्रैक्टिस सेम कर सकते हैं आप. ठीक है, हाँ, और इसके बाद आपको दोनों पेज, दिस साइड यू विल यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साइड बाय साइड आपको लिखना. ठीक है, इन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस व्हाटएवर आई एम राइटिंग, ओके, दोनों पेज साइड बाय साइड आपको यूज करना है. इफ इट इज वेकेंट नॉट वेकेंट, तो यू व्हाट विल डू, ये पेज छोड़ दीजिए. अगर सपोज लाइक फॉर एग्जांपल यू फिनिश ओवर हियर, this page is going vacant, the same thing you'll practice over here, clear as homework later on, and then both the pages should be vacant side by side आपको, because just to have a good convenience of studying, it will be easier. ठीक है.
बोलिए। हाँ, कलर एंड कलरलेस दोनों। कलरलेस नहीं, सिंबल ऑफ कलर्ड एंड कलरलेस, और जहां पे कलर्ड है उसका कलर भी लिखना है, कलरलेस का खाली सिंबल लिखना है। कलरलेस एंड कलर्ड दोनों हो गया। हाँ, वो भी पूरा कैटायंस एनायंस सबका लिखना। Start copying down this. बोलिए।
हाँ, पेज नंबर 83। हाँ, एमजी का नहीं दिया है, इसमें लिखना है। चलो, अभी वो कम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करे, कुछ भी लिख रहे, सुनना ही नहीं दे रहा। इधर क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तो तुम्हारा नाम, इधर आ जाओ। चलो तुम क्या आ जाओ, कुछ नहीं लिख रहे हो। दिस इज द स्टेट ऑफ योर बुक माय फ्रेंड। हाँ, केमिस्ट्री खाली आपकी। ये क्या है? तुम कुछ नहीं है इधर की बुक। रुद्र कम कम, आई थिंक सो टू कॉल योर इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, जीएसटी, लेस देन, ग्रेटर देन, सब। तुम भी आ जाओ, यही तुम्हारा। पेरेंट के बाद फोन कर देना, एक ही बुक है सर। चलो इधर आओ। एक ही बुक में लिखे हैं और ये कुछ भी नहीं। कहाँ जा रही है आप? ये बाहर है सर। एक्चुअली कुछ बताना भाई, तुम अभी हमारा कुछ नहीं कर रहे हो। सुनाई दिया एक बात नाउ, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा सब सुनाई देगा। सर आई फेल्ड, यू नो
That kind of thing is actually what is very much scary. And ये point पे तुम अपना maths physics एक ही book बना के रख रहे हो, तो बड़ा एक scary kind of situation develop. ठीक है? एक ही book है physics, chemistry, maths. नहीं science का एक ही book है. Divide that book. Morning I am giving you. Okay, maths का book उसमें लिखा. It's going to be tough job for you to differentiate. Divide करके, लेकिन science का अलग, maths का अलग है. Maths का अगर तुम वो बनाओ separately. एक मिनट. Now, show me your book. Physics, chemistry separate है कि नहीं? अकेले. दूसरा, तुम्हारा book किधर है? रणवीर, show me your book. हाँ? मेरा पूरा chemistry. क्या होगा? Separate books are required. ये क्या है? Continue. चलो दो. Show me your book. Where is physics? नहीं तुम रखो. पहले complete करो. Complete करो पहले. All. हाँ, show me your same book, same order में करना है. ये क्या है? पहला चैप्टर कहाँ है गया? Periodic table. ये टाइटल लिखा ही नहीं तुमने. Periodic table. Periodic table. चलो कंप्लीट करो इसको. अपडेट करके रखो. Should be complete. इसका एक ही बुक है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो. तुम्हारा मैं सेकंड लेक्चर बुक नहीं था पिछले. चलो जाओ. सर पहला जो नेक्स्ट टाइम करके लाओ. चलो सर सेकंड लेक्चर है मेरा. सेकंड लेक्चर में पूरा सब. नो कंप्लीट करो पूरा. ठीक है ना? सेपरेटली बुक लिखो. नेक्स्ट तक वेट करते हैं. Yeah, Bilal, start right. Relax. Hello.
let's come to this reaction over here. Okay, there are some reactions which are giving you the idea about analysis. Yeah, later on, not 2 times, 3 times. We have to work and we hey, one thing, we have to work continuously. We are ICSE board exam is actually much tougher in terms of, for example, the question reactions. So there are about 200 to 300 reactions, and you can see the sample over here. Okay, यहाँ पे 10 से 12 reactions already है इधर, and therefore यहाँ पे अगर तुम 3 बार practice नहीं करोगे, you'll not be able to overcome these reactions. नहीं, 1 week का ही time मिलेगा, ठीक है? Now, continuously work. Now, we have to really work very hard. Okay, now listen to it carefully. We have to work on this. Action of sodium hydroxide on metallic salts, as well as sodium of what ammonium hydroxide on metallic salts. Listen to it carefully. But before that, we have to go for the solubility of salts. Remember, solubility chart. Here, this solubility chart is there in acidic base, acids, bases and salts. तो उसको थोड़ा सा हम लोग ने पहले ले लिया, जिससे कि आपको बेसिक्स मालूम पड़े. All sodium, potassium and ammonium salts are soluble in water. All nitrites and nitrates are soluble in water. All bicarbonates except potassium bicarbonate and sodium bicarbonate are insoluble. These two only insoluble, और दूसरे सब soluble. ये भी sparingly soluble, ये ना थोड़ा सा soluble रहता है. All sulfates are soluble except barium sulfate. ठीक है, silver sulfate. Chloride में mercurous chloride, lead chloride, silver chloride, they are insoluble. और दूसरे सब chloride इसके अलावा they are soluble. All sulfides are insoluble. यानी कोई भी ऐसा sulfide नहीं है जो soluble है as such. Then all sulfides are soluble. All sulfides are insoluble. कोई भी ऐसा sulfide नहीं है जो soluble है. ठीक है, तो इधर सब dash डालना. Oxide, phosphate, hydroxide. So how to remember this? ठीक है, how to remember this? Okay, it's like, for example, sodium. We can remember this way. Sodium, sweet. Potassium, pretty. Ammonium, Alia. Sweet, pretty, Alia said, no, no. No, no. Okay. To Bollywood studio company. Chloride ka company. So Sweet Pretty Alia said no to Bollywood studio company for films like Sanju, Savaria. Okay, then Chennai Express. Oh my God. Pushpa. What did highway? That means she said no to this, for example, okay. Sweet Pretty Alia said no to Bollywood studio company for films like Sanju, Savaria, Chennai Express, oh my God, Pushpa. What did highway? Hydroxide ka H, phosphate ka Pushpa, oxide, oh my God, that is oxide O se start hota. Carbonate C, Chennai Express, S, Savaria or Sanju. यानी कोई भी films का नाम आप दे सकते हैं. We're starting with, but this particular thing clear, etc. But what is important? This way you can remember that sentence for a short period of time. Clear? Now, इसमें कोई भी हाइड्रोक्साइड देखो इधर, ये हाइड्रोक्साइड है ना, सब इंसॉल्युबल है. ये देखो, look at this, lead hydroxide, okay, lead hydro, zinc hydroxide, सब हाइड्रोक्साइड इंसॉल्युबल. देखो,
तो ये इससे आपको चार्ट से मालूम पड़ेगा सर कैसे मालूम पड़ेगा which hydroxide is insoluble all hydroxides are insoluble okay remember इधर लिखा है चार्ट से देखना है all hydroxide कोई भी एक्सेप्शन नहीं there's no exception over here clear so listen to it carefully here understand this calcium nitrate ठीक है suno now here the ions which are there in this particular salt are calcium ions. Now when calcium ions are reacted with what? Now look here, all the reagents, now nobody will write, listen to it carefully. Sab book mein diye, ek baar thoda ruko. Here, all of them will react with what? Sodium hydroxide. Look at this. Sodium hydroxide. Look at this. Okay? Sodium hydroxide se jab calcium ion react karta hai, listen, okay? It gives you white PPT of calcium hydroxide with magnesium dull white PPT. So आपको immediately मालूम पड़ेगा थोड़ा सा dullness रहेगा PPT में, तो magnesium ion. अगर white PPT अपने normal like curd kind of PPT is there, means it is definitely calcium ions. Of course, we are having further cross checking. Then अगर for example dirty green color रहेगा ferrous hydroxide. If it is reddish brown, then it is actually what? Ferric. If it is pale blue, I mean characteristic blue color, means copper ion. Okay? If it is gelatinous, gel type of precipitate you get, like just like hair gel. Okay? When you take hair gel, you find, for example, it's like crooked kind of, for example, what is a liquid in the solution, and that is nothing but gelatinous white PPT. And if it is chalky white, chalk ka color dikhai de raha hai, okay? Then it is lead ion. But now, how will you cross check again? You add excess of NaOH. When you add excess, ये जो कैल्शियम आयन हाइड्रोक्साइड में अगर और NaOH डाल दिया तो वो हाइड्रोक्साइड ही रहेगा, मींस देयर इज नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. तो ये insoluble, magnesium insoluble, ferrous insoluble, ferric insoluble, copper insoluble, but zinc and lead, what they do, they get dissolved in NaOH and form a complex compound sodium zincate. But all sodium salts are soluble in water. यानी सोडियम का जो salts है zincate ion वो soluble. तो आपको क्या करे, ये जो gelatinous white पूरा dissolve हो जाएगा and you find it's a colorless solution. Likewise for this chalky white PPT that also get dissolved in excess of NaOH. Means there are two things. One is equivalent amount of NaOH and second is excess amount. Excess में आपको देखना है कि lead dissolve हो रहा है कि नहीं. तो आपको easily you can differentiate between calcium, magnesium and zinc and lead. यानी if they form soluble, that means magnesium and calcium are out of that analysis. Why? Because ये दो में present है. But now second, how will you cross check, sir? Zinc ion है कि lead है, उसके लिए क्या करना है? You again treat with ammonium hydroxide. Listen to it carefully. This part is important. यानी यहाँ पे I will connect. Why? Zinc sulfate जब NH4OH से react करेगा, gelatinous white PPT मिलेगा. But again you add excess of NH4OH. This will get dissolved, but lead will not get dissolved. यानी आपको immediately यहाँ मालूम पड़ेगा ये दोनों में dissolve हो रहा है, means एक zinc ion है, और अगर एक dissolve नहीं हो रहा है, means lead is out of that particular race. It is zinc salt, यानी zinc ion. Likewise, for example, copper sulfate. देखिए copper कैसे मालूम पड़ेगा? Of course, blue color is very much characteristic color. ठीक है? So this blue color of copper sulfate with ammonium hydroxide, you will get gelatinous white PPT, pale blue. But when you add excess of NH4OH, you get inky blue color. थोड़ा color deep हो जाएगा. Why? Because in place of that water, okay, or hydroxyl, you are having ammonia. So when you change that particular anion or maybe neutral molecules, the color changes. Sort of deep, the color becomes deeper. In all the other cases, they are insoluble. यानी कोई भी इसका effect नहीं आएगा excess. Okay, the excess of NH4, you can easily understand that this is they are not dissolving. First and most important, how you differentiate between calcium and magnesium. Second, with ammonium hydroxide, calcium का reaction होता ही नहीं. It is magnesium का reaction हो रहा है आपको, दोनों जगह dull white मिल रहा है, but यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा कुछ reaction ही नहीं. No PPT at all. Calcium वैसे का वैसे ही salt है. That means then you can say, sir, second test tube में magnesium है, first test tube में calcium. Why? Calcium is not reacting with NH4. So suppose given a test tube like 5 to 6 test tubes are given, you do these tests with same reagent. अब फिर excess डाल दो और फिर आपको differentiate करना पड़ेगा. So you will say, sir, one test tube is having reddish brown color, means it is ferric. One test tube is having dirty green color, means it is ferrous ion. So you can easily analyze that. This way you can analyze the various ions. Remember of the salt. ठीक है? लिखो. हाँ. Yes. ठीक है ना? All of you now you start writing with balancing. Now balancing एक एक करके आके इधर balancing देंगे.
अगर आज नहीं हुआ टॉपिक, नथिंग टू वरी, नेक्स्ट टाइम विल डू इट, बट ये रिएक्शन सब आपको 2-2, 3-3 बार लिखना है। और कैसे लिखना है? बिकॉज सी वन कॉमननेस इज व्हाट, सब में सेम पीपीटी। स्वीट प्रिटी आलिया said no to Bollywood studio company for films like Sanju, Savaria, Chennai Express. Oh my God, Pushpa, but did Highway. ये solubility chart आपको इससे relate करना पड़ेगा, because ये this is there in acid, bases and salts, but इसको हम लोगों ने forward में लिखे है। सर कैमरा को थोड़ा राइट साइड कीजिए ना, पूरा नहीं। Yes, why not? वो वाला। अच्छा कैमरा, हाँ सॉरी, हो गया? सर। दिख रहा है? हाँ सर। बस ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो वो टूट जाएगी। ठीक है? हाँ हाँ, क्या वो कौन पीछे? चलो बाहर जाके बात करो। कौन बात कर रहे हैं? इधर आओ। हु इज टॉकिंग ओवर देयर? कैमरा प्रेस मैडम को दिख रहे हैं। अरे कैमरा से देख रही है। हाँ, लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग, कंप्लीटेड। कैमरा से दिख रहा है पीछे, सुनो उधर कैमरा है, कैमरा पीछे, यू नो दैट। और सब कैमरा एक्टिव है, दे आर नॉट इनएक्टिव कैमरा, सब कैमरा एक्टिव है। तुम्हारा जिधर भी यहाँ पे टैप होगा इमीडिएटली यू विल कम, सेंसर सब लगे हैं, जिधर भी बात होगा, ज्यादा मूवमेंट होगा तो आपको बाहर भेजा जाएगा, एंड देन यू विल बी एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। ठीक है ना? तो अभी एकदम पढ़ाई करो। अंश जी आपने लिखा, पूरा ध्यान दे के लिखिए। गुड। तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब एक ही जगह पे चलेगा तो नहीं, मैथ्स भी उसमें दिखाई दिया है। आई रेड इन फ्रंट ऑफ दिस योर फ्रेंड्स। हाँ, तो अभी अलग रखो सब एकदम। चिल्ड्रन बी सिस्टमैटिक, अभी सिस्टमैटिक कर दो, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के आने के पहले ये यू हैव टू बी परफेक्ट, otherwise what will happen, it will be a messy kind of process. okay, एक मेस हो जाएगा और तुम किधर घर पे क्यों नहीं, 3 बार लिखने के बाद। एक मिनट, अभी तक टॉपिक इसीलिए कंप्लीट कर, स्टिल टाइम। ये अभी तो एक ही बार लिखना है, बट इसके बाद और 10 रिएक्शंस आ रहे हैं उसके बाद, यानी हाँ 9 रिएक्शंस आएगा। हो गया ये? ऑल ऑफ यू शो मी। ये दोनों साइड आपको, एक साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? हाँ, और उसके नीचे प्रेसिपिटेट, उसका कलर लिखिए। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस? नहीं, दिस वन डर्टी ग्रे, रेडिश ब्राउन, सेम वे। लिखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इधर लिख दिया था, बट सेम चीज वही, बिकॉज अगर ये कंपाउंड ये है तो वही, ठीक है? दिस फॉर यू, दिस इज पेल ब्लू। जो नया है वहां पे लिख दिया इंकी ब्लू, सॉल्युबल, कॉम्प्लेक्स, टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, टेट्रा सल्फेट,
chalky white zinc lead hydroxide. That is insoluble. जहाँ dash दिया means वो further no reaction, remains insoluble. My friend, आ जाओ, आगे आ जाओ. अरे तो इधर बैठो, किधर you are blocking the board. हो गया तुम्हारा complete. Sweet pretty Alia said no to Bollywood studio company. Okay? For films like Sanju, Savaria, Chennai Express, oh my God, Pushpa, but did Highway. Highway was a film what she got award for it. Okay? So Alia Bhatt is something which is who is very sweet pretty Alia. क्यों बोल रहे हैं? Because उस sweet का मतलब यहाँ पे सोडियम, pretty का ये ना for example potassium, okay? ठीक है ना? तो आलिया के जगह पे तुमको दूसरा कोई फॉर एग्जांपल बॉलीवुड एक्ट्रेस लग रहा है कि वहां पे आ सकता है ए से, तो यू कैन राइट डाउन नथिंग टू इट. व्हाई नॉट? जो भी लिखना है, लेकिन मिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. दिस इज जस्ट आई मेड इट सो दैट यू कैन रिमेंबर. यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस. ए से बट लड़कियों का नाम ही आएगा, प्रिटी लड़कियां. हैंडसम लिखना है तो फिर अपना बॉयज का. हाँ, तुम्हारा फ्रेंड का नाम लिखना है तो फ्रेंड का नाम लिख. यू वांट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, वहां पे आज तक वो बॉयज में प्रिटी आएगा. और स्वीट नॉर्मली होते हैं स्वीट, लेकिन यू कैन राइट प्रिटी के जगह पे कुछ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक. कौन सा? you only think. हो गया? हो गया सबका? Yes, sir. ये हुआ. दिस साइड ओवर, दिस साइड इज ओवर. ये वाला देखो, देखो लिखो आराम से. लास्ट बेंच आ जाओ, इधर आओ, दोनों जन आ जाओ. बात, टेक योर बैग एंड स्ट्रेट गो होम बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू टॉक. आ जाओ बोथ ऑफ यू. Yeah, over. Very important part. Thank you, sir. Sorry. हो गया? सबका हो गया? हाँ? हो गया सबका? Children, write down and balance the reaction. Ranveer, balance कीजिए reaction. Let me see balancing part.
जानवी बैलेंस कीजिए रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन next one, first reaction is not taking place at all. Magnesium nitrate plus NH4OH will give you what? Magnesium hydroxide, that is 2 ammonium nitrate. Balance हुआ कि नहीं? Then यहाँ पे देखो 2 hydroxyl, यहाँ पे already balance. ठीक है? Then next one, this is 3OH. क्यों? इधर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 3NH4OH बैलेंस नहीं है रिएक्शन. क्या रिएक्शन होगा? ये वाला थर्ड वाला रिएक्शन कैसे? फोर्थ वाला रिएक्शन इधर तो NH4, अरे NH4Cl वो सल्फेट नहीं, this you change as Cl. बोल सावरिया बोलिए. बराबर ना? कॉपर सल्फेट 2 बार आ रहा है क्या? हाँ? Okay, now listen to it carefully. Let us understand the reactions. Who's talking? Stand up. Second last. इधर आओ. आपका हो गया. Show me your book. My friend, increase your speed because क्या होगा? इतना reactions. क्या हो रहा है? दिखा इधर बड़ा लिखे, इधर बिलाल इस साइड आ जाओ. लेट उसको लिखने पीछे से उसको दिखाई नहीं दे रहा. पहले उस पे इधर आओ. बैठ, बिलाल के बगल में बैठो. बैठो, मजे से बैठो और लिखो. पढ़ाई करो, पढ़ाई. या ऑल ऑफ यू हो गया? लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट हो गया? शो मी योर बुक. Yeah, look at this. Gauri has written in a very nice manner. यहाँ पे आपको दोनों साइड, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी चार्ट नीचे, सॉल्युबिलिटी चार्ट ये साइड में लिखने से, बिकॉज यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिला होगा तो नीचे लिख दीजिए, बिकॉज नीचे जो स्पेस मिलेगा पेज में उस साइड आई गॉट अ स्पेस, दैट्स फॉर. अरे एसी चल. रूल नंबर 1 फॉर एसी, rule number 1 for AC is what? Fan should be off. First rule AC का है. If you don't know the rules of AC, AC में फैन चालू नहीं होने. Why? Because फैन का जो हवा है बार बार उसको क्या करेगा? AC के ऊपर कंप्रेसर कंटिन्यूस रन करना पड़ेगा. ओके, और दूसरी बात क्या होगा? वो गर्म हवा यानी फैन मोटर विल बिकम वार्म, उसकी वजह से AC को कंटिन्यूस रन करना पड़ेगा. ओके, और तुम्हारे को कोल्ड एयर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होगा, इसीलिए बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, हो गया सबका? बॉटल इज कूलिंग इफेक्ट सबका. ऑल ऑफ यू डन? Those are not able to see, mean, from here they can see the textbook and go ahead.
Virav Dalal has given this magnesium का सिर्फ एक additional चीज दी है. Go. Okay, done all of you. कर लिया आपने? वाह, she is having problem. Left से चालू करो, left से. लिखना आप left से शुरू करो. राइट, क्यों लेफ्ट से शुरू कीजिए. हाँ, अभी से आज आज काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में प्रलय हो, देख कबीरा रो. ओके, नाउ लेट अस कम टू 6 रिएक्शंस ओवर हियर. कौन सा? ये वाला पेल ब्लू. insoluble, short form of insoluble. IO insol. हाँ, बुक कंप्लीट किया. शो में द बुक. माय फ्रेंड, तुम्हारा बहुत मूवमेंट ज्यादा हो रहा है. पढ़ाई लिखाई एक तरफ और मूवमेंट ज्यादा हो रहा है क्लास में. ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई 22.5 हो रहे हैं और इधर तुम्हारे को पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट करता है. आई एम वेरी मच वरीड अबाउट यू. ये क्या है? ये NaOH है सर, ये वाला और NH4OH. भाई बुक रखो. रुद्र, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आई एम वेरी मच वरीड अबाउट यू. आ जाओ, जाओ. वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें तुम्हारे को रिलैक्सेशन मिलेगी. ठीक है? या ये वाला, ये बिलो सल्फाइड. सल्फाइड है. कितने? कैल्शियम कार्बोनेट. कार्बोनेट CO3 माइनस. कैल्शियम कैसे आएगा? नेगेटिव आयन. लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. कोबाल्ट नहीं, कार्बोनेट, ऑक्साइड, फॉस्फेट, हाइड्रोक्स. अरे इट्स गिवन इन द विराव दलाल सेम सॉल्युबिलिटी चार्ट. वही कॉपी किया मैंने, लिया है बट स्टेटमेंट वहां पे नहीं दिया. लिखा आपने? लिख लिया सबने? ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? रणवीर डन? ऑल हो गया आपका? नंबरिंग, तुम नोटबुक निकालो, नोटबुक टेक्स्ट बुक निकालो. टेक्स्ट बुक में सब आंसर दिया. चलो, दिस पार्ट इज ओवर. ऑल ऑफ यू, ये हो गया कि नहीं? ओके ओके. यस, बस बराबर है. या
Please write down this reaction. Product click करो. This one is over. Over ना first plate. ये वाला. ये इतना तक हो गया. हो गया कि नहीं? Very slow. Show me your book. इतना तक कुछ नहीं लिख रहे. फ्रैक्चर भी नहीं. इनका हाथ फ्रैक्चर है. Still she is writing. Look at left hand. Right. सॉल्युबल में AL ऑल है क्या? All. इधर आपने दो लिखा है. अरे टेक्स्ट बुक ओपन करो. पूरा दिया है उसको कॉपी करो. किधर है? पेज नंबर 82. माय फ्रेंड बैठ को आराम से लिखो. हाँ पेज नंबर ये देखो. ये लिखा है. पूरा ये लिखना है और इसके पीछे ये वाला. बस इधर से कॉपी करो. ठीक है. सिर्फ मैक है. ये दो ठीक है. हाँ ये लास्ट वर्क yeah, completed. We will not be able to wait for such a long time. We have to be faster. 3 times, yes. Completed. Complete करना है next. Just a moment. Let me write last reaction. Last set of reaction. Yeah, who's that? Come here, write. Otherwise, it will be late. Now, please pay attention over here. Let us see this reaction over here. Now, what is important? Metals are famous to react with acids. Okay? But here, metals, there are certain metals which are actually what not only reacting with acids, but also react with base. Now, metals like 3 metals है जो unique है. One is zinc, okay, transition element का. Aluminium, which is a normal element, or lead also a normal element.
but they have a tendency to not only react with acid, but also base. Just like, okay, frog is an amphibian animal, lives on land as well as water. But a man cannot live, in water because that man is a terrestrial kind of animal. Whereas fish can live in aquatic life, but have an aquatic life throughout. If they are taken out of water, they actually cannot survive. That means there are certain aquatic lives, certain terrestrial life, but there are certain animals which can live on land as well as water. For example, frog, crocodile, turtle, etc. Now these animals are having both the, for example, like just like bat. Bat comes in bird as well as, for example, let us say mammal. So I mean, normally it is a mammal. Why? Because it gives birth to young ones. Okay, but basically वो bird जैसा fly कर रहे हैं, इसलिए उसको bird में category में भी actually like it's a dual kind of characteristic. Okay, so likewise over here, lead, aluminum, zinc, these are called amphoteric metals. उस लोग का compound क्या बोलते हैं? Amphoteric oxide या amphoteric compounds. So that means the metals or their oxides or their hydroxides, okay, when they react with not only acids but also bases. Now यहाँ पे तुमको सिर्फ bases का, why? Because we have shown the reagent used in this chapter is NaOH or NH4OH. ठीक है? तो यहाँ पे ये metals क्या करते हैं? Strong alkali like sodium hydroxide से react करते हैं. And what they give you? Zinc reacts with sodium hydroxide to give you what? Sodium zincate. Aluminium, sodium aluminate, and sodium plumbite. Plus hydrogen gas is released. Now, how will you test hydrogen gas? Hydrogen gas, you bring it near the flame, it gives you a pop sound over there. Plus, it gives you a bluish color. Okay, pale blue color. Okay, और इससे कैसे pass करेंगे? For example, you pass through a soap solution, soap का bubbles form होगा hydrogen का, और जैसे तुम flame के नजदीक लाओगे, because of kinetic energy, bubbles जब फटेगा, okay, or gas when it comes out, it gives you a pop sound. Clear? And sometimes the concentration of hydrogen is so large that a flame blue color आपको दिखाई देगा थोड़ी देर के लिए. I mean, just a fraction of a second we can say. So blue flame and pop sound indicates hydrogen gas is coming out. Okay? So remember, so ये hydrogen को निकाल देता है और सिर्फ सोडियम और ऑक्सीजन से कंबाइन करता है. उसका जिगरी दोस्त हाइड्रोजन निकल जाता है. ठीक है? ये मेटल्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं. भाई कहो ना कार मिलेगी, ऑल्टो जेन फरारी, पब्लिक है क्यूरियस. नो, है मींस हाइड्रोजन सबसे नीचे है, लेड उसके ऊपर है थोड़ा सा, फिर भी वो उसको डिस्प्लेस कर दे. You can see hydrogen is missing in all the three. Remember, because hydrogen कोई डिस्प्लेस करने का कैपेसिटी metals are having. तो metals सिर्फ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर, ऑक्सीजन को they cannot. Okay, because strong bonding is there with the metal and oxygen. Okay, same way here. Here, this is zinc oxide plus NaOH. What you'll get? Sodium zincate plus Bilal. क्या आंसर मिलेगा? This H and this oxygen will combine to give you what? Water. This Al2O3, NaAlO2, sodium aluminate and water. And here sodium plumbite, Na2PbO2 plus water. Now what is this? This is water. This is salt. This is base. That means they are acting as acids. Why? एक acid ही base को neutralize कर सकता है. ये third chapter में देखेंगे. एक बेस और एसिड, अगर ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये बेस है, तो ये एसिड ही होगा. Although they are basic, metallic oxide, they should be basic in nature, but they are acting as acids over here. एक oxides can act as basic as well as acidic. So in front of the strong bases, these oxides are behaving as acids, right? और यहाँ पे देखो, ये क्या है? Salt, water, base or acid. Now this time, what are acids? Acids give H plus ion, but दिखने में ये bases लग रहे. क्यों? इन लोगों के पास hydroxyl ions. But in front of the strong base, they show acidic behavior. They give H plus ions over there. We are going to see that concept later on. ये दिखने में OH दिख रहे. दोनों, sir, you will say, sir, दोनों base ही दिख रहे, but they are not base. One is acting as acid. Or how will you come to know? We know very well sodium hydroxide and this thing, potassium hydroxide, strong bases. अगर ये base है, ये salt है, ये water, तो ये इन लोग acids ही होंगे. Because दो acids अपने आप को नहीं काट सकते. Means reaction नहीं हो सकता. Right now, 9 reactions are there. Metals, metal oxides, and metal hydroxides. Huh? Balance the reaction.
हो गया? सब लोग ने लिखा, बैलेंस करो रिएक्शन को. Now all of you, last part for this today, not the reaction, but very important part is the questions based on this topic in this particular board syllabus. Okay, previous years board questions, 3 questions है वहां पे, ठीक है? 3 question means 2020-21. Okay, पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है? हाँ, सब लोग को सबमिट करके जाना है पेपर पे. ओके, अभी ये बोर्ड क्वेश्चंस जो है ना, अभी इसका ये चैप्टर का 2021, ठीक है, 2019, 18 और 17. ओके, ये क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है. एंड देन आकांक्षा, आई होप यू अंडरस्टैंड. क्या हुआ? हाँ, अभी लिख के आपको. नाउ फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन ऑल ऑफ यू. हाँ, यस, ओके. 5. Okay, only one, sorry, 2 answers only you write, not all of them. 2 answers यानी 2020-21 and 2019-18 बस. चलो, right now. पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है उसमें? 86. हाँ, पेपर सबमिट करना है काउंटर. अरे ये जो अभी तुम लिखोगे, अभी 2020-21 and 2019-18 बस. दो पेजेस निकालो, लिखो भाई. हाँ, वो लिखो. चिल्ड्रन, एक मिनट. वी आर हैविंग मेनी रिएक्शंस यहाँ पे चैप्टर्स में. थोड़ा डोंट बी स्लो बिकॉज यू कैन सी vast large number of reactions are there, so you have to cooperate with me. थोड़ा increase your speed, otherwise you will be in the receiving end. तुम लोग को receiving end होगा, मुझे कुछ. हाँ? I think so time has come where you have to be serious. Reaction. हाँ, हाथ दुख रहा है क्या? You are able to write. रिलैक्स करो, डोंट. हाँ, बैलेंस करो. एक्शन ऑफ मेटल्स और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स. हाँ, 2021. हाँ, हाँ, लास्ट बेंच. हाँ, गौरी, आपने बैलेंस किया रिएक्शन को? क्या बैलेंसिंग है फर्स्ट वाले का? हाँ, बैलेंस ना. कौन सा ड्रॉप है? कौन सा ड्रॉप?
आफ्टर एडिशन ना किधर है किधर एक्सेस अरे हम लोग ड्रॉप वाइज किधर यूज कर रहे हैं एक्सेस सेकंड में तो एक्सेस यूज या जो नहीं रिएक्ट करेगा तो नहीं रिएक्ट करेगा ठीक है ना फेरस क्लोराइड वही है सेम है फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट सेम खाली कलर सेम रहेगा फेरिक ओनली एनाइन विल बी डिफरेंट ferrous sulfate will give dirty green color of ferrous hydroxide and ferric sulfate will give you reddish brown बस इतना ही लिखना है रिएक्शन तो लिखना नहीं है खाली आपको ये लिख हाँ बस एक मिनट बोलिए क्या नहीं दिख रहा है Good. Now all of you. इधर देना है मुझे नाम लिखो अपना सीबीएसई आईसीएसई खारगर सॉरी पीछे क्यों लिखा अभी पेपर पे लिख के दो आई टोल्ड यू ना पेजेस निकाल के अपना लिखो राइट योर नेम खारगर टुडेज डेट लिखो मजे से 5 तारीख है हाँ वेट सिट डाउन Yeah, last bench collect from this side. ये क्या है नाम नहीं लिखा तुमने just collect from collect करो किधर जा रहे हो बैठो 5 मिनट है अरे my friend put your head down relax for some time one meditation exercise will do okay wherein we'll try to see please pack up all of you last 5 minutes after completing दिमाग खराब हो जाए केमिस्ट्री बहुत सारे रिएक्शंस फॉर्मूले हालत खराब हो जाए मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा तुम्हारा दिमाग बायाट करो 5-5 बार लिखो हाँ हाँ बोलो 72 आउट ऑफ वेरी गुड अच्छा ग्रेट ओके so this way you have to work continuously चलो next क्यों
फॉर्मूला नहीं, पूरा रिएक्शन लिखना है। सिट डाउन, इधर जा रहे हो, बैठो 2 मिनट